it's a very interesting film. I think it challenged me on many levels as an actor. Right. Because we're playing multiple. So playing two different. Karan and I both are playing two different characters. Totally, there are 4 characters in the film, and then with Ammi, I have a 3rd character to play. Right. So it's been quite an experience. And yeah. As Anurag sir was talking about daughter-father relationship, how was this relationship with these wonderful, wonderful people? Of course, sir, music, and Anurag Kashyap, when he's directing you, after Jawani Jaane Man, जहाँ पे एक अच्छी सी daughter बने हो आप, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले negative नहीं बोल सकता मैं, उनको तो grey shades वाली, आप बनी थी Freddie में, और अभी यहाँ पे, so what do you have to say? About Anurag sir? Yes, of course. Anurag sir के बारे में क्या ही बोलूं? तारीफ मत करना, थोड़ा सा ना कुछ ऐसा दे दो जो छप जाए हर जगह. But I have nothing but तारीफ to say, honestly. जब मैं अनुराग सर से मिली थी, वो actually मैंने इस फिल्म को जवानी जाने मन से पहले ही साइन किया था. This was supposed to be my first film. I think I signed this film 5 years ago? 4 years ago? 2018. 5 years ago. तो उस टाइम पे मैं अपने टेस्टिंग फेज में थी, बहुत मीटिंग्स कर रही थी, बहुत ऑडिशन दे रही थी, मुझे प्रोजेक्ट मिल ही नहीं रहे थे. एंड एक पॉइंट पे वो डाउट आ जाता है ना कि एम आई केपेबल ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, डू आई हैव व्हाट इट टेक्स. एंड आई रिमेंबर एट दैट टाइम आई मेट अनुराग सर, एंड ऑन एन इंस्टिंक्ट मैंने एक रील बनाई थी, एंड सीइंग दैट रील, 7-minute रील इट वाज, वॉच्ड विद फुल फोकस, और 7 मिनट के बाद ही looked at me, he said, I have a film that's perfect for you. He's like, will you do my film? And that just gave me this incredible sense of belief in myself, that someone that's known for scouting out talent and nurturing talent has seen something in me. I was like, my God, what is this? I was actually prepared to send her back. Yeah. When I entered the room, he was like, I don't do films of your time. As a daily film मैं बनाता हूँ, I don't have anything for you. And 7 minutes later. So, thank you for all the confidence you gave. Good. Amazing. Thank you so much for sharing all that. And this is cool AF. Let me tell you. Yeah, pun intended. All right. So now, ladies and gentlemen, it's time to introduce to the world of Indian cinema this super cool इंसान जिसको introduce किया है. Imagine अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म में लिया है. Talent की तो कहानी होगा ये इंसान. Give it up for Karan Mehta, ladies and gentlemen. Don't make some noise. ना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है. बहुत एक्साइटमेंट है सर. ऑनेस्टली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मेरे लिए तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अनुराग सर के साथ पिक्चर करूँगा. बहुत सारी चीज़ें सोची थी बट ये नहीं कभी सोचा था. तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं और मेरे 2 शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे साथ में. तो हमने बहुत सारी बनाई. कुछ तो हम दिखाना भी नहीं चाहते लोगों को. बन गई थोड़ी और यूट्यूब पे डाल दिया. तो इनकी बेटी है आलिया, उन्होंने वो पिक्चर देखी और इनको दिखाई. और मैं एक्चुअली मैं बाथरूम में था, ठीक है. बाथरूम में मुझे टेक्स्ट आया जो अनुराग सर है, उन्होंने आपकी पिक्चर देखी है एंड ही वांट्स टू मीट यू. मैं बाथरूम छोड़ के सीधा भागा क्योंकि हम कुछ और शूट कर रहे थे उस समय. सबको मैंने बोला अनुराग सर मिलना चाहते हैं और पिक्चर बनाना चाहते हैं. नाउ आई थिंक वी आर हियर, ट्रेलर लॉन्च. लेकिन वो काफी समय लगा. 7 साल. सर क्या होता है, मतलब व्हाट इज इट दैट एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क विद अनुराग कश्यप? व्हाट इज दैट वन थिंग? आज खुद की तारीफ आप करो प्लीज, बिकॉज़ यू टू मॉडर्न कुछ नहीं है अबाउट इट. See, I think people give me their best. I don't take the best out of them. They give me their best because I let them be their best. Right. So मैं कुछ नहीं करता. प्रॉब्लम क्या होता है कि सब लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं चीजों को, तो वो टैलेंट भी कंट्रोल कर लेते हैं, उसको उभरने नहीं देता. ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई जादू नहीं करता. मैं सिर्फ लोगों को अपना बेस्ट देने देता हूँ. बाकी नर्चरिंग, मतलब मेरा जो प्रोसेस होता है बहुत, मेरे दिमाग में किसी भी एक समय पे 5-6 फिल्मों की स्क्रिप्ट चल रही होती है, लिखी होती है. तो मेरे को पहले ये फिल्म बनानी थी, लेकिन इसके लिए सही कास्टिंग चाहिए. तो पहले मेरे को 2016 में ये मिला, 2018 में वो मिली. जब वो मिली तो मैंने कहा अब ये फिल्म बनेगी. तो उसके बाद फिर अमित के साथ हमने 2017 से म्यूजिक पे काम करना शुरू कर दिया. छोड़ दिया ये स्पेस जो है, जब इसके बाद बाकी फिल्मों से समय हो तो ये मेरी फिल्म पे काम करे. तो इसलिए मैं इतना समय देता हूँ. और
और फिर इसके साथ में मिला, इसको होमवर्क दिया, 2 साल इसने भी अपना होमवर्क किया, पार्कोर किया, 3 साल पार्कोर किया, सब कुछ सीखा इसने पिक्चर के लिए, क्या क्या सीखना है। मैं खाली टाइम पे बोर हो रहा है, राजा मेरे सेट पे असिस्ट भी कर लेता था। तो दैट्स हाउ आई वर्क विद Alaya also. I give them and let them be. और ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है Alaya का। ऐसा जब जवानी जाने मन आई तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, that you have to introducing types, काम मिल रहा है काम करो। तो ऐसा होता था, और स्पेस में ये लोग अपने आप ही निकलते हैं, हर कोई अपने आप अच्छा ही करना चाहता है। I always believe that people want to do their best. मैं बता दूं सर, इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ना ये जो इंटरेक्शन है, दिस इज आल्सो वेरी ऑर्गेनिक, कि वो लग रहा है कि हाँ ठीक है, छोड़ा है जो है वो सबके सामने आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई योर मूवीज आर डिफरेंट। आपने कहा कोई जादू नहीं करता, जादू करते हैं हम बड़े पर्दे पर सर, ये मैं बता दूं, यहाँ पे सब लोग मानेंगे। इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, रंजन सिंह साहब एंड कबीर आहूजा, गिव इट अप फॉर देम प्लीज। ये जो सिनेमा fresh cast, what do you have to say on that? Because a lot of people are very, you know, आज के समय में skeptical कि भाई fresh cast होगी, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन यहाँ जो देखा है बिल्कुल Gen Z की ट्यून के साथ चल रहा है। What do you have to say? Actually, what you have been saying is that everything is so organic. Right. So, जैसे सर ने बोला 2016 में करण मिले, फिर अलाया, फिर म्यूजिक, वैसे हम प्रोड्यूसर्स भी ऐसे ही मिले। Right. So we joined the last, but like you said, everything has turned out so organic for this film, and what is come out of the screen is that it's pure and organic. Right. So that's what I say. Right. So there's a lot of buzz. इस फिल्म को लेके बहुत सारी बातें हो रही है जब से टीजर आया, और यहाँ पे तो सोने पे सुहागा है। The songs are also out, you know. Jukebox है, उसको भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। How do you see it? Release के पहले? I'm just happy that you're finally getting it after this long journey to release it. I also came in the end, so I'm just excited, and I mean, what could be better than having him as the part of my first movie. I remember telling him that I remember listening to the DVD soundtrack for 8 years in my car. So I'm just lucky. So I'm excited and nervous. लोग मिलते रहते हैं, कारवां बढ़ता जाता है। और एक कारवां आगे लेके, इसके पीछे एक और नाम है। He definitely understands his audience, ladies and gentlemen. Head करते इस प्रोडक्शन स्टूडियो को, जी स्टूडियो से शारिक पटेल। इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, जी स्टूडियोज इज एक्नॉलेज्ड एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। हाउ डू यू सी दिस मूवी अपनी फिल्मोग्राफी में, जबकि इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे चैनल्स को एक साथ लेके चल रहे हैं? It's a young, fun. I mean, it's a young. I won't call it fun. It is partly fun, but it's a young film with an exciting star cast and fantastic directors, fantastic director, music composer. So it's a very important film in our slate. Right. और ये जो कारवां ये बोल रहे थे, सबसे एंड में इंजन चल रहा था, लास्ट बोगी हम ही लोग हैं। Right. और वो एंड वाली बोगी से अब हम लोग है ना धक्का मार रहे हैं आगे, bringing it to the theaters. It's obviously a film we are all very excited by. The songs are doing wonderfully. Yeah. And you know, fresh, new, young cast, talented team. So we're all excited. Just watch February 3rd. I'm sure सर कुछ तो धमाल करेगी। आप प्लीज बोले, आपका प्रोसेस भी कुछ ऐसी था जैसे अनुराग सर ने कहा कि ठीक है, फालतू प्रेशर नहीं करते हुए जो चीजें हो रही हैं होने दो ऑर्गेनिकली। So with you also was it like that? Because as you said, you came in the end. Yeah, so we're working with Anurag on another wonderful movie called Kennedy, which will be showcasing to the audiences in the world I think in the next few months. Right. And that was also a very organic process of हमने भी छोड़ दिया इनको कि जैसे ये आर्टिस्ट को छोड़ते हैं, हम है ना डायरेक्टर को छोड़ देते हैं कि अब आप है ना it's a relationship which even though Kennedy was the first one we signed, but this is the first of many more to come, and there will be more associations going forward. With Amit, we had done Rocket Gang with Moscow, so you know, so we are working with the finest talent that is there, and the studio becomes, you know, is a culmination or the aggregation of the talent you work with. यार हम लोग है ना खुद तो you know कर नहीं सकते हैं सब, तो जो you know ideas to find the right partners and let them do what they're supposed to do, and you know everyone grows with that.
Right. Thank you so much for sharing that. इस ड्रीम टीम के लिए एक बार तालियां हो जाएं प्लीज. अब यहाँ पे एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, कोई भी आप में से दे सकता है. डीजे मोहब्बत कौन है? Who is मैं शारिक सर. Why do you think he approved this? I'm DJ. Distribution jockey. Okay. So DJ मोहब्बत कौन है वो पता लग गया हमें. बाकी it's over to the wonderful members of the media. आप लोग अपना सवाल जवाब कर सकते हैं. उससे पहले we'll do a quick photo op. Yeah. हाँ पता है. अरे. और थोड़ा क्लोज. क्या बात. थोड़ा सेंटर. Lovely. Thank you so much. And now we'll quickly have the chairs on stage. Yeah. Shukriya. And कहाँ से आ रहा पहला सवाल बता दो मुझे, मैं आ जाऊंगा. अच्छा ये ऑलरेडी हाथ में माइक बाजी के पास है. जी. आराम से. All right. थोड़ा सामने. हाँ. मेरा पहला सवाल अनुराग जी से है. अनुराग जी आपके सामने ट्रेलर अच्छा लगा हमें. क्या अगर एक राइटर बन जाए हो तो सोने पे सुहागा होता. आपको कैसा लगता है? लिखना जो है पहला स्टेज होता है फिल्म मेकिंग का. तो काफी सालों से मैं दूसरों की स्क्रिप्ट अपने नजर से देख रहा था. ये कहानी बहुत समय से मेरे अंदर थी और कुरेद रही थी. तो जब ये दोनों मिले उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस शुरू हुआ और बहुत ही दिल से आई हुई फिल्म है कहती है और उसको बहुत अच्छे से म्यूजिक से. लेकिन बहुत जरूरी फिल्म थी मेरे लिए. अमित जी जो आपने गाना गाया फिल्म का ही था ना? हाँ जी. तो बड़ी अच्छी कंपोजिशन थी वो भी और जो हमने सुना ये भी. तो कुछ कंपोजिशन के बारे में बताइए. एक्चुअली उस गाने के पीछे ऐसा है कि अनुराग सर हमको हमेशा कुछ एक नया टर्म लेके जाते हैं. देवली में उन्होंने इमोशनल अत्याचार दिया था. फिर आई थिंक मनमोहन जी ने एक प्यार को प्यार कर दिया था. तो मुझे याद है कि मैं और शरीफा जी जो लिरिक राइटर है इस गाने के, हम लोग जैम कर रहे थे और हमने सर को बोला कि ऐसा कुछ इस फिल्म में भी दो. तो मुझे याद है दरवाजे निकलते उन्होंने दरवाजे पे बोल दिया हाँ घनघोर कनेक्शन है. उनको दिमाग में तभी शायद स्ट्राइक हुआ. तो हाँ फिर वहाँ उसको लेके हम चल पड़े. एक्चुअली हाँ दरवाजे पे. Hello, this is Raj from Sansad Vani here. Congratulations to all the team, and I'd like to ask Alaya. Alaya. How the chemistry between you and with your co-star? Me and my dear co-star have known each other for the last 10 years actually. We knew each other socially but not very, very closely, but I've known him for a very long time. This was our first time in a work environment together, and we were bickering all the time. Non-stop, but not in like a serious way, like in a stupid In a way. very Gen Z way. No, not even in a Gen Z way, in a very like 5-year-old kids arguing. Like I'd be like, you're stupid. He'd be like, you're double stupid. I'll be like, you're triple stupid and even stupider on top of that. You know, like very stupid things. He brought out some weird side in me, and I think I brought out some weird side in him. So it's a very special chemistry that we share. It's unlike any other sort of friend or co-actor that I've ever had. And there's this different level of comfort that's been really lovely to have throughout the process, during shooting and now during promoting this film and now finally releasing this film. अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है. अगर हम आपके सिनेमा की बात करें तो वो
उसको आपने कभी दायरे में नहीं बांधा। अगर बात करें, आप एक तरफ मनमर्दियाँ और डेवली बनाते हैं, तो दूसरी तरफ गुलाल जैसी भी फिल्म बनाते हैं। आप जो लिखने की अगर हम बात करें, अगर मनमर्दियाँ लिखते हैं तो मनमर्दियाँ तो खैर उन्होंने लिखी थी, लेकिन उसमें आपका पुट तो था ही। तो आप दूसरी तरफ ब्लैक फ्राइडे भी लिखते हैं। तो बाकी निर्देशक अगर हम देखें तो वो लोग एक दायरे में ही अपने आप को बांध कर रखना पसंद करते हैं या एक सुरक्षित दायरा बनाकर रखते हैं। आपने हमेशा अपने ही दायरे तोड़े हैं। तो ये चीज आपको कभी वो नहीं करती है, इनसिक्योर नहीं करती है कि आपने अपने को नहीं? इनसिक्योरिटी से तो मेरा दूर दूर तक मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है। मतलब आप यहाँ पे क्यों आए थे, मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ। तब सब कुछ छोड़ के, इतने सारे एजुकेशन के बाद हर चीज छोड़ के आप आ गए हो यहाँ पे, तो फिल्म बनाने आए थे। एक फिल्म बनाना चाहता था या एक फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। अब इतनी फिल्में बना चुका हूँ, इतनी फिल्मों का हिस्सा रह चुका हूँ जितनी किसी की फिल्मोग्राफी नहीं। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल होता हूँ, मुझे फिल्म बनाने को मिलता है। और अगर सुरक्षित दायरा जो बोलते हैं ना, वो उसमें आदमी सुरक्षित होके, सिक्योर होके, सेफ होके रिपीटेटिव हो जाता है, और वही आदमी आगे चल के बोरिंग हो जाता है। बहुत इजी है मेरे लिए जाके गैंगस्टर फिल्म बनाना, बहुत आसान है। मैं अभी कल 3 अनाउंस कर दूंगा, सारी दुनिया आ जाएगी पैसे देगी, लेकिन नहीं करना मुझे। और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खुद को भी एक्सप्लोर करना है। फिर आप मर जाते हो, फिर आप ऐसे हो जाते हैं कि हाँ, जब मेरे टूट जाए, मैं बिस्तर से हिल ना पाऊँ, तो मैं वापस फॉर्मूला रिहाइश करता रहूँगा, फिर सर्वाइवल की बात हो जाएगी। अभी बहुत है मेरे पास। शारिक जी, आपसे एक सवाल है। आप जब आए में तो आपने बहुत उसको एक कहना चाहिए क्रांति ला दी थी, क्योंकि मुझे नेशनल अवार्ड या तो आपका जो स्क्रिप्ट है उस पर बहुत वो रहा है, जोर रहा है, और आपने एक परंपरा भी शुरू की कि दूसरे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो भी इस पर ध्यान दें। तो इस फिल्म में ऐसी क्या बात थी जो आपको स्क्रिप्ट के लेवल पे पसंद आई? ये तो स्क्रिप्ट तो हमने पढ़ी नहीं थी, ये हमने पिक्चर देखी कि वी गॉट इन राइट एट द एंड। और ये हमारा बेसिकली इट इज़ आवर फेथ इन अनुराग। एंड एक एसोसिएशन जब चालू होता है, द टाइमलाइन, जो दो अलग अलग कहानियाँ जो इस फिल्म में चल रही हैं पैरेलली, इज जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट of screenplay, the way the film plays out is basically the music director and the director combination, which really, and as I said, the young star cast. हमने जब देखा कि ये around Valentine's Day एक अच्छा विंडो मिल सकता है, तो we put our marketing strategy, into this, and distribution strategy, rather than too much into the स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी ये पिक्चर बनी हुई थी जब तक हम लोग इन्वॉल्व हुए थे। बट यू आर राइट, आई मीन एज अ स्टूडियो, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा काम है कि विभिन्न डायरेक्टरों और राइटरों और एक्टरों के साथ काम करें, और उनको एक बार कहानी समझ ले, उनको अपना काम करने दें, और कभी अच्छी बनती है, कभी ठीक बनती है, कभी एकदम ठीक नहीं बनती है। वो एग्जीक्यूशन रिस्क ये बिजनेस में है ही है, तो वी हैव टू एक्नॉलेज इट, एंड दिस वंस टर्न्ड आउट वंडरफुल। या करण, यहाँ पे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और कुछ ही समय पहले आपने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर अपलोड की थी शाहरुख सर के साथ, एंड सर भी थे। हाउ ही हैज इंस्पायर्ड यू इन योर रियल लाइफ, एंड क्या कुछ आप अपनी जीवन के बारे में बताना चाहोगे? Yes, see, I think we've all grown up watching him firstly, and the thing that he has done, जो उन्होंने किया, वो सबको मालूम है, the way he's been, and actually में जो उनके बेटे हैं वो मेरे दोस्त रहते हैं, और बचपन से देखा है, उनसे सीखने को मिलता है। वो सांस भी लेते तो हम बहुत सीखते हैं। तो यही है कि एक्चुअली में उन्होंने अपनी फिल्म में काम करने के लिए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने बहुत सिखाया है। रेस में असिस्टेंट जी, तो मैंने उधर भी असिस्ट किया, एंड just keeps teaching us. He's full of knowledge, and even as a human being, he's just so inspiring. He's kind to anybody, and there's no such thing कि
even when you're with him, he doesn't make you feel like कि मैं शाहरुख खान हूँ. मतलब he's just a normal chill guy. So that's the kind of person you want to be. That's what मुझे ऐसा ही बनना है यार. एक अच्छा इंसान जो बस अपना काम करता रहे, passion है काम के लिए. That's one thing. Hello. शारिक जी, यहाँ पे मेरे शारिक जी आपसे जानना चाहूँगा, how was your association with Anurag sir? Lovely. Yeah. It's as I said, it's the beginning of an association. We've known each other for many years. 2006. Yeah, I was working in Midday when he was making Bombay Black Friday. फिर जब Bombay Velvet की script लिखी जा रही थी, I was in Viacom and we were the producing development into that, and then of course I moved out and the entire movie moved out. So I've known him for many years, and so those were so अभी जाकर के एक association बन रहा है, and as I said, this is the first of many, and you'll be hearing a lot more announcements during the course of this year, and we're hoping that the association between us personally and our companies, continues to, Is there any dream project? Every project of his is a dream for him, is a dream for us. So all of them are, I see the different scales of films, right? And I think with Anurag, there's a certain, he's very passionate about the subjects he's making, and sometimes they are small, sometimes they are minuscule, sometimes they are big. So there's no dream project. Every project will have its own, will go on its own journey and become a dream project. That's how it is. Hi, sir. ये एक पॉडकास्ट है, ऑलमोस्ट प्यार में डीजे मोहब्बत पॉडकास्ट का नाम है. और ये डीजे मोहब्बत एक इंसान है जिसको लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, और बच्चे कनेक्ट करते हैं. ही टॉक्स टू देम अबाउट एवरीथिंग. और ये लड़की उसकी बहुत बड़ी फैन है, जो उनके कॉन्सर्ट पे जाना चाहती है, और कहानी वहाँ से शुरू होती है. और वो कॉन्सर्ट का नाम ही ऑलमोस्ट प्यार में डीजे मोहब्बत है. जनरली उसके कॉन्सर्ट्स का वो हिंट्स पॉडकास्ट में डालता है, तो लोग पता करके अपने आप आते हैं. और ये जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं म्यूजिक फेस्टिवल के लिए, इसके लिए, उसके लिए. तो ऐसा है वो पॉडकास्ट का नाम. Alaya, hi, straighter over here. Russell from PTI. Hi. Alaya, you have done 2 films till now. This will be your third. Yeah. And 2020 was Jawani Janaman, then recently Freddy, and now this. Your choices have seemingly been very conscious, and they have not been in the typical mold of somebody who comes new into the Hindi film industry. So how does it feel, being away from this rat race? Because you earlier said also that you were doubting when before you got Jawani Janaman. Yeah. So how does it feel being away from this rat race? Are you completely secure in this space? I think as an actor, you're never really completely secure. I think also if I was feeling completely secure, I would lose half my hunger and motivation and drive. I don't think I can ever allow myself to feel completely secure. Do I feel content and happy and grateful? Yes, I definitely do. I'm really grateful that people have come to me with such amazing projects. Of course, Jawani Janaman and Almost Pyar was Jawani Janaman I tested for, and then I happened to get. And Anurag sir saw my reel and really liked it. But all the other projects are wonderful projects that have come to me because the makers, directors, producers believed it was something that I could really do well in. And now when I look at it, now this is my third, and in this coming year, there are 3 more after this. And when I look at the lineup, I suddenly realized the other day, I was like, I have a film in every genre. And that's quite an incredible feeling so early on in my career. So I feel very grateful and very excited. I feel like the time that the pandemic took away from my career, I finally feel like I'm getting it back, and I can't wait for everyone to see and hopefully like all that I've done. Anurag ji, I would like to know from you also. We have all heard about heard about your love for directors like Tarantino, Martin Scorsese. There was a photo op also you got with Scorsese at Cannes, and you were like fanboy with him. Is there any Indian filmmaker who you feel is as inspiring as those 2 legends for you, and would you like to, fanboy with one of those filmmakers? वो है नहीं गुरुदत्त साहब.
था और दूसरी जो अब्रार साहब ने डायरेक्ट की थी साहिब बीवी और गुलाम, वो मेरी 2 फेवरेट फिल्म हैं, इनको मैं कई बार रिविजिट करता हूँ। जी मैम। Hi sir, my question is from to your right. To your right. On your right. Yes. My question is from Ranjan and Kabir sir. जैसा कि शारिक सर ने बोला कि आप लोग ट्रेन की वो आखिरी बोगी थे जो आए ऑन बोर्ड, तो what made you both? उन्होंने तो बता दिया what made him come on board. What made you both come on board for this film? One, of course, it's Anurag. And like Sharik also mentioned, anything to do with Anurag is always exciting. Two, if you ask me really, like personally, I think the music is great and the story, if you ask me, it's for the first time we are attempting this kind of a story for the segment that we are talking about. It could be Gen Z, I don't know the exact definition, would be a millennial, but that's the main thing. And also we've tried to do what happened 15 years back when Devdi had come. There was a new sound, there were new actors, and there was this new music. We are hoping that we are also in the same. अक्सर क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ पहली बार करते हो और जिसका कोई टेस्ट मार्केट नहीं होता है, हाँ, तो हम लोग खुद ही बाउंस कर करके यंग लोगों के साथ और फिर धीरे 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 सब लोग, मैं बोला है कि कारवां बनता जाता है, फिर धीरे धीरे सब लोग आते हैं और देखते हैं रिएक्शन देखकर। ये मैंने अक्सर हमारी हर फिल्म के साथ ऐसे ही होता है, वो अपने आप में जब पहली बार होती है तो सब लोग वेट करते हैं देखने के लिए कैसे आगे जाएगा, कौन रिएक्ट करेगा, कौन रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी तो कहानी इमोशनली आपको बात करेगी। हाय अनुराग, रवि फ्रॉम बेबी पिक्चर्स। मेरे 2 छोटे सवाल, एक फिल्म से रिलेटेड और एक फिल्म के अलावा। अनुराग, आप हमेशा से बहुत इंटेंस फिल्में बनाते रहे हैं, चाहे 5 की बात हो, ब्लैक फ्राइडे की बात हो, गुलाल की बात हो, या अगली, या गैंग ऑफ वासेपुर, सारी मेरी फेवरेट फिल्म है। जब आप लव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं पर्दे पर, जैसे कि देवड़ी में आपने किया था, मनमर्जिया में किया था, ऑलमोस्ट प्यार डीजे मोहब्बत में, वो क्या चीज़ है कि आपको आप बार बार पर्दे पर प्यार को एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं? देवड़ी में हमने एक अलग अंदाज देखा, मनमर्जिया में आपने इसमें भी अलग ही एकदम नई चीज़ देखी। मतलब मैं जनरली मैं रिलेशनशिप एक्सप्लोर करता हूँ। मैं लोग जनरली हमारे यहाँ एक जॉनरा है लव स्टोरी का, तो जिसको मैं फॉलो नहीं करता। मतलब एक लड़का लड़की मिले, प्यार हो गया, कभी विलेन होता है कभी नहीं होता है, हमसे वो कहानियाँ मुझे कहनी नहीं है। मैं रिलेशनशिप्स और लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ, चाहे वो देवड़ी के थ्रू हो, चाहे मनमर्जिया के थ्रू हो, चाहे ऑलमोस्ट प्यार। और ये एक अलग जनरेशन है जिसको मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। ये जनरेशन को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये एकदम नई दुनिया है, मेरे लिए भी नई दुनिया थी। इसमें भी मैं कूद गया था समुद्र, इसलिए समुद्र में आप कूद जाते तो फिर आप डाइविंग सीख जाते। तो ये था कि हाँ, कहानी कहनी है, इनकी कहनी है। और मेरी बेटी का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा इस फिल्म में थ्रू आउट, और वो है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म वहां से आई है, ये फिल्म देखने के लिए कि हम जो है, हमारी जो जनरेशन है, इस फिल्म की इनविजिबल विलेन है। इस फिल्म की इनविजिबल विलेन हमारी जनरेशन, जो हमें लगता है कि हमें सब पता है और हम अपने बच्चों की जिंदगी कंट्रोल करना चाहते हैं। और हमारी कंडीशनिंग, हमारी पेट्रियार्की, हमारा जो है जिसे हम खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं, वो हमारे बच्चों के लिए विलेन है, हमारे बच्चों की बाधा है। और वो जो है, वो कैसे दुनिया को देखते हैं, उनका प्यार कैसे होता है, उनके रिश्ते कैसे होते हैं, ये वो फिल्म। और आप इसमें ये फिल्म उनके बारे में तो है ही है, लेकिन ये फिल्म बहुत ज्यादा आई थिंक हमारे जनरेशन के लिए है, हमारे जनरेशन के माँ बाप के लिए। अनुराग, एक छोटा सा और सवाल, आखिरी 2 सवाल लेंगे। एक छोटा सा और सवाल। अनुराग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा से सेंसरशिप से लड़ते रहे हैं और बॉयकॉट ब्रिगेड जो है दोनों से लड़ते रहे हैं, और आप हमेशा खुलकर बात करते रहे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ये बात कही है कि कोई भी नेता उठ के किसी भी फिल्म के बारे में कुछ भी बोलने लगता है और सारे दिन टीवी पे वही चलता है, तो लोगों को बचना चाहिए फालतू में कमेंट करने से। आपको ऐसा लगता है कि इससे जो बॉयकॉट बॉलीवुड ब्रिगेड जो है उसका असर कम होगा, लोग उनके मैसेज को सीरियसली लेंगे? क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा कमेंट किसी इतने बड़े नेता की तरफ से नहीं आया था, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह वो अगर 4 साल पहले कह देते तो वाकई फर्क पड़ता। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ही लोगों को काबू कर पाता है। मतलब चीजें हाथ से बाहर निकली हुई हैं। मतलब
मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई किसी की सुनेगा। बहुत जब आप प्रेजुडिस को एम्पावर करते हो साइलेंस से, जब आप हेट्रेड को एम्पावर करते हो साइलेंस से, वो इतनी ज़्यादा एम्पावर हो चुकी है कि वो अपने आप में ही ताकतवर बन चुकी है, वो मॉब बाहर निकल चुका है। Just take one last question. हेलो अमित और शाहिद, आप कुछ ऐड करना चाहिए? अमित, हेलो अनुराग जी जी पूछे सर। No, I think there I durust hai. I think we are happy that a statement has been made, and obviously it was actually Anna Sunil Shetty who actually also brought it up in the meeting with in Bombay, I think a couple of weeks ago. So I'm happy it's happened because it's something which is क्योंकि किसी को समझ भी नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, but you know अगर if the Prime Minister, Honorable Prime Minister has said it, I hope that it at least slows down. Anurag is cynical about this, and you know maybe. So I just hope he gets proven wrong, and you know just we all hope that, and we just hope that it does, you know, stop. I mean, films are meant to entertain. हम लोग जो बनाते हैं सब, you know, for the मनोरंजन of the audience. कभी अच्छी बनती हैं, कभी as I said ठीक से नहीं बनती हैं, कोई. So I think it's just, I think it's good. I think it's just, it's laudable, and as an industry we're happy with that. Hi, Anurag sir. Hi, can I? ना फिल्म के बारे में बात करें, हमने जो रखी है। आइए सर, आप आइए। Hi, yeah. Sir, I'll come to you for the last question. I'll come to you. Thank you, Nitin. My question is for Alaya. You know, I listened to the entire music yesterday. And I really, the music, while there is consistency in terms of the quality, but the words are like, the lyrics are like, I think Gen Z would be the appropriate word. One of the songs, obviously, which really touched me is Maintenance. Mr. Kashyap mentioned about the earlier generation. I also come from the 80s. And during my time, obviously, this word, I liked A, B, or C. They were only. So I wanted to know from your personal end, you know, you belong to this new generation. In today's time, if somebody of your, the youth, you know, comes and is interested in you, does he need to also ensure that certain maintenance का bill भी भरना पड़ेगा? दर्द निकला है सर। Basically, you're asking if I'm high maintenance or not. I'm asking for the current generation. Obviously, I come from Mr. Kashyap's generation. See, I feel like any generation you're in, there will be people that are a little high maintenance and little people that are not high maintenance. I feel like that's more a personality thing than a generation thing. Is my opinion. Anyone that has another opinion. So, and for me personally, sometimes I can be very high maintenance, sometimes I'm not. But my personality changes every week, so I don't even know what I am. But generally, yeah, I don't think it's a So I guess the maintenance cost has increased with the economy increasing. Maintenance cost must have increased for sure. Mr. Kashyap, obviously you mentioned about it briefly. You know, one of my senior colleagues asked you. And when I look at your films like Manmarziya or you know, now this film, like I always ask myself, is Anurag Kashyap flirting with romance? रोमांस तो is flirting with romance genre in cinema. नहीं, मैं रोमांस तो वासेपुर में भी था और रोमांस तो आवाज में भी था. The primary story is obviously revenge there. Primary story is yes, relationships. मतलब primary story is the generation and the relationships. It's not really everything is not really boy falls in love with girl, girl falls in love with boy, and that becomes a romance genre. So I don't think so. It's a film about kids. It's a film about us. It's a film about things that we see and confront. And it is a fun film. It's a fun film because the characters are fun, because the youth is fun, because they have their own things to deal with. आपने maintenance की बात की तो this generation about self-maintenance. It's not about high maintenance. One more thing, it's also is a UA film. Anurag is a fun film, which is the new thing. Sir, Anurag, एक question. एक last. Sir, Anurag is here. Sir, आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूजिक मतलब कि जैसे 80s की टाइम की बात की जाए या 90s की बात की जाए तो म्यूजिक लव स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता था सर, और मतलब कि काफ़ी अच्छी म्यूजिक रहते थे. तो आपके हिसाब से मतलब कि आप आजकल के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इतने अच्छे म्यूजिक्स हो नहीं रहे हैं, तो मतलब कि क्या लग रहा है आपको कि मतलब कि
क्या कमी आ रही है? आई थिंक वो म्यूजिक मेरे लिए हमेशा से फिल्म इम्पोर्टेंट रहा है और मैं म्यूजिक के बिना फिल्म नहीं बना सकता हूँ। कभी कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूजिक की जरूरत होती है, कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूजिक का उतना बड़ा स्थान नहीं होता है। और मुझे नहीं मालूम कि हम लोग इस हिसाब से नहीं बनाते हैं, म्यूजिक नहीं करते हैं कि ये चल रहा है तो उसका एक वर्जन बना दिया, या वो चल रहा है तो उसके हिसाब से कर। हम लोग हमेशा कुछ नया करने की ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। सो मार्केट में क्या गाना चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिधर भी देखो लोग म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो कुछ तो चल ही रहा है ना भाई। जहाँ देखो लोग म्यूजिक सुनते हैं, जहाँ देखो लोग कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, हम भी तो आजकल कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, जहाँ जो शो देखो उसमें गाने बज रहे होते हैं। तो म्यूजिक का चलना क्या होता है और नहीं चलना क्या होता है और कैसे तय होता है ये मुझे नहीं पता। अनुराग साहब, One last question. जी सर, आइए। अनुराग साहब, सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com। सवाल आपसे ये है कि जेनरेशन गैप तो हमेशा रहा है, हमेशा मतलब आपके ज़माने में आपके माँ बाप के साथ रहा होगा, उनके ज़माने में उनके माँ बाप के साथ रहा होगा। जैसे एक लाइन आपकी थी कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, इसी तरह माँ बाप बेटा बेटी के दोस्त हो सकते हैं या नहीं, यही आपकी इस फिल्म का मौजू है, और नहीं है तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए जनरेशन ऐसा, मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में एक जनरेशन का फर्क था, लेकिन मेरी बेटी और मेरे बीच में कई जनरेशन का फर्क है। बिकॉज ये इंटरनेट आने के बाद जनरेशन जो है फोन के 2G 3G 4G से 5G चलेगी तो उतनी जनरेशन में जाते हैं। हर आईफोन के साथ एक जनरेशन बदलती है, हर ऐप के साथ जनरेशन बदलती है। जब हम लोग प्रमोशन करने निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये सब नई चीजें लड़के लोग कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्या हमारे बच्चे कहाँ क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं चीजों को। वो एक बहुत ही अलग जनरेशन है। और जब ये सब सवाल मन में उठते हैं तो अब मैं जब पूछने गया तो मेरे को बहुत प्यार से एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट समझाया कि देखिए भाई, ये दुनिया आपकी नहीं है, ये दुनिया उनकी है। आप इस दुनिया में माइग्रेंट हो, वो नेटिव्स है, वो नेटिव्स है। तो उनको ये मत सिखाओ कि उनको कैसे रहना चाहिए, उनसे सीखो। ये बहुत बड़ी सीख मिली थी मुझे, और आई थिंक उसी हिसाब से भी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जहाँ हम जा कहाँ रहे हैं, कि हम हमारी जड़ें ऐसी हैं कि हम लोग अपने आप को एक जगह बैठा देते हैं, हम बदलते नहीं एक पॉइंट के बाद। तो बहुत जरूरी है खुद को देखना और अपनी नजर को चेंज करना। Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. And yeah, it's time for a quick photo op.